हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए जो क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए टॉपिक 4 असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट का टॉपिक कवर कर रहे हैं जो प्रोफेशनल नॉलेज का है। ठीक है, ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक स्टार्ट रहेगी जिसमें अपन 25 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट के 25 एमसीक्यू। तो देखिए, फर्स्ट है व्हाट इज असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट क्या है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट मार्केटिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सेकंड मैनेजिंग असेट्स एंड लाइबिलिटी टू मिनिमाइज फाइनेंशियल रिस्क, थर्ड ऑडिटिंग कंपनी अकाउंट्स एंड फोर्थ ओनली मैनेजिंग बैंक लोन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मैनेजिंग असेट एंड लाइबिलिटी टू मिनिमाइज फाइनेंशियल रिस्क, वित्तीय जोखिम को कम करने के लिए संपत्ति और देनदारियों का प्रबंधन। बिकॉज ALM balance assets and liability to ensure liquidity and profitability and risk control। वैसे देखिए, क्रेडिट मैनेजर के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी रिस्क ALM फोकस ऑन। ALM का मुख्य जोखिम कौन सा है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल रिस्क, सेकंड ऑपरेशनल रिस्क, थर्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड फोर्थ फ्रॉड रिस्क। तो करेक्ट आंसर है थर्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क, ब्याज दर जोखिम। बिकॉज फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट impact asset and liability values। सेकंड, हाउ डज ALM हेल्प अ बैंक। ALM बैंक को कैसे मदद करता है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट improve net interest margin and liquidity, second increase customer base only, third only increase lending limit and fourth reduce number of branches। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट improve net interest margin and liquidity। नेट इंटरेस्ट मार्जिन और तरलता सुधारता है बिकॉज प्रॉपर असेट लाइबिलिटी मैचिंग एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेशन गैप इन ALM। ALM में ड्यूरेशन गैप क्या मतलब है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट लोन प्रोसेसिंग डिले, सेकंड मिसमैच बिटवीन असेट एंड लाइबिलिटी मैच्योरिटी, थर्ड डिपॉजिट टाइमिंग डिफरेंस एंड फोर्थ कस्टमर रीपेमेंट गैप। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मिसमैच बिटवीन असेट एंड लाइबिलिटी मैच्योरिटी, संपत्ति और देनदारियों की परिपक्वता के बीच अंतर। बिकॉज टाइमिंग मिसमैच लीड टू इंटरेस्ट रेट एंड लिक्विडिटी रिस्क। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच फाइनेंशियल रेशियो इज अ की फॉर ALM। ALM के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात कौन सा है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट लिक्विडिटी गैप रेशियो, सेकंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, थर्ड डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड रिटर्न ऑन असेट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट लिक्विडिटी गैप रेशियो, तरलता गैप अनुपात। बिकॉज इट मेजर एबिलिटी टू मीट लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, सिक्स, व्हाट इज लिक्विडिटी रिस्क इन बैंकिंग। बैंकिंग में तरलता जोखिम क्या है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट प्राइस फ्लक्चुएशन रिस्क, सेकंड लोन डिफॉल्ट रिस्क, थर्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड फोर्थ रिस्क ऑफ नॉट मीटिंग कैश आउटफ्लो। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ रिस्क ऑफ नॉट मीटिंग कैश आउटफ्लो, नकदी निकासी पूरा न करने का जोखिम। बिकॉज इनएबिलिटी टू फुलफिल विड्रॉल एंड रीपेमेंट्स। नेक्स्ट, सेवन, ALM हेल्प्स टू। ALM किस प्रकार मदद करता है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट अवॉइड रेगुलेटरी कंपाइलेंस, सेकंड मैच कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, थर्ड इंक्रीज लोन रेट एंड फोर्थ रिड्यूस बैंक कैपिटल। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मैच कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, नगद प्रवाह और निर्गम को मिलाना। बिकॉज इट इंश्योर बैंक हैज फंड्स व्हेन नीडेड। नेक्स्ट, एट, व्हाट इज द एम ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट इन ALM। ALM में ब्याज दर जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट प्रोटेक्ट नेट इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम रेट फ्लक्चुएशन, सेकंड इंक्रीज लोन अमाउंट, थर्ड अवॉइड टैक्सेशन एंड फोर्थ अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर। करेक्ट आंसर है फर्स्ट प्रोटेक्ट नेट इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम रेट फ्लक्चुएशन, दर में उतार चढ़ाव से नेट असेट्स इनकम की रक्षा करना। बिकॉज इट स्टेबलाइज बैंक प्रॉफिट। नेक्स्ट, नाइन्थ, विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर ALM हेजिंग। ALM हेजिंग के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट फिक्स असेट, सेकंड इंटरेस्ट रेट स्वैप, थर्ड कैश डिपॉजिट एंड फोर्थ लोन एग्रीमेंट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड इंटरेस्ट रेट स्वैप, ब्याज दर स्वैप। बिकॉज स्वैप रिड्यूस एक्सपोजर टू रेट चेंजेस। नेक्स्ट, टेंथ,
द गैप एनालिसिस इन एएलएम रेफर्स टू, एएलएम में गैप एनालिसिस का क्या मतलब है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, कंपेयरिंग असेट एंड लायबिलिटी बाय मैच्योरिटी बकेट, सेकंड कंपेयरिंग ब्रांचेस, थर्ड कंपेयरिंग एक्सपेंसेस एंड फोर्थ कंपेयरिंग इनकम। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, कंपेयरिंग असेट एंड लायबिलिटी बाय मैच्योरिटी बकेट, परिपक्वता अवधि के आधार पर संपत्ति और देनदारियों की तुलना करना, बिकॉज इट आइडेंटिफाइज मिसमैच इन टाइमिंग। नेक्स्ट 11, व्हाट डज यील्ड कर्व रिप्रेजेंट, यील्ड कर्व क्या दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, प्रॉफिट रेशियो, सेकंड असेट टर्नओवर रेशियो, थर्ड इंटरेस्ट रेट बाय डिफरेंट मैच्योरिटीज एंड फोर्थ लोन टू डिपॉजिट रेशियो। करेक्ट आंसर है थर्ड, इंटरेस्ट रेट बाय डिफरेंट मैच्योरिटीज, विभिन्न परिपक्वता अवधि के लिए ब्याज दरें, बिकॉज इट हेल्प इन इंटरेस्ट रेट रिस्क असेसमेंट। नेक्स्ट 12th, why is ALM important for regulatory compliance, नियामक अनुपालन के लिए ALM क्यों आवश्यक है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, रिड्यूस स्टाफ, सेकंड टू अवॉइड टैक्सेस, थर्ड टू मीट बेसल एंड आरबीआई गाइडलाइन एंड फोर्थ टू इंक्रीज मार्केटिंग। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, टू मीट बेसल एंड आरबीआई गाइडलाइन, बेसल और आरबीआई दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए, बिकॉज इट इंश्योर बैंक स्टेबिलिटी एंड प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट 13, व्हाट इज फंड इन रिस्क इन एएलएम, एएलएम में फंड इन रिस्क क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, रिस्क ऑफ असेट डेप्रिसिएशन, सेकंड रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू रेज फंड एट रीजनेबल कॉस्ट, थर्ड रिस्क ऑफ कस्टमर लॉस एंड फोर्थ रिस्क ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू रेज फंड एट रीजनेबल कॉस्ट, उचित लागत पर फंड जुटाने में असमर्थता का जोखिम, बिकॉज इट अफेक्ट लिक्विडिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट 14, ALM रोल इन कैपिटल एडिक्वेंसी इज टू, पूंजी पर्याप्तता में ALM की भूमिका क्या होती है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट, इंक्रीज फीस, सेकंड रिड्यूस असेट बेस, थर्ड इंश्योर एडिक्वेट कैपिटल टू रिकवर रिस्क एंड फोर्थ इंक्रीज लोन वॉल्यूम। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, इंश्योर एडिक्वेट कैपिटल टू कवर रिस्क, जोखिम को कवर करने के लिए पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित करना, बिकॉज इट मेंटेन बैंक सॉल्वेंसी एंड रिस्क कुशन। ठीक है। नेक्स्ट 15, व्हाट इज ड्यूरेशन मिसमैच, ड्यूरेशन मिसमैच क्या होता है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट, व्हेन लायबिलिटीज आर जीरो, सेकंड व्हेन नो असेट एग्जिट, थर्ड व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटी मैच्योरिटी डू नॉट मैच एंड फोर्थ व्हेन असेट्स इक्वल लायबिलिटीज। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटी मैच्योरिटी डू नॉट मैच, जब संपत्ति और देनदारियां की परिपक्वता मेल नहीं खाती, बिकॉज इट लीड टू इंटरेस्ट एंड लिक्विडिटी रिस्क। नेक्स्ट 16, व्हाट इज टिपिकली द स्कोप ऑफ एएलएम, एएलएम का सामान्य रूप से दायरा क्या होता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, ऑपरेशनल रिस्क, सेकंड इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, थर्ड ओनली फ्रॉड रिस्क एंड फोर्थ ओनली क्रेडिट रिस्क। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड मार्केट रिस्क, ब्याज दर जोखिम, तरलता जोखिम, बाजार जोखिम, बिकॉज इट मैनेज मल्टीपल फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट 17, हाउ डेटा स्ट्रेस टेस्टिंग हेल्प इन एएलएम, एएलएम में स्ट्रेस टेस्टिंग कैसे मदद करती है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट, इवैल्यूएट बैंक फाइनेंशियल रिजिलेंस, सेकंड इंक्रीज लोन प्रोसेसिंग टाइमिंग, थर्ड रिड्यूस लोन अप्रूवल एंड फोर्थ ओनली ऑडिट ट्रांजैक्शन। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, इवैल्यूएट बैंक फाइनेंशियल रेजिलेंस, बैंक की वित्तीय मजबूती का मूल्यांकन करते हैं, बिकॉज सिमुलेट एडवर्स सिनेरियोज। नेक्स्ट 18, व्हाट आर एएलएम कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर, एएलएम कमिटी क्या जिम्मेदारी होती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, मॉनिटरिंग असेट लायबिलिटी रिस्क एंड स्ट्रेटेजी, सेकंड ओनली कस्टमर सर्विस, थर्ड लोन डिसबर्सल एंड फोर्थ मार्केटिंग ओनली। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, मॉनिटरिंग असेट लायबिलिटी रिस्क एंड स्ट्रेटेजी, संपत्ति देयता जोखिम एंड रणनीतियों की निगरानी, बिकॉज इट्स अ सेंट्रल इन रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन। नेक्स्ट 19, व्हाट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो, सेकंड डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न एंड इंटरेस्ट पेड, थर्ड लोन अमाउंट एंड फोर्थ टोटल बैंक डिपॉजिट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न एंड इंटरेस्ट पेड, प्राप्त ब्याज और दिया गया ब्याज का अंतर, बिकॉज इट इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट 20, what does gap report in ALM show,
एएलएम में गैप रिपोर्ट क्या दिखाती है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ब्रांच परफॉर्मेंस, सेकंड मिसमैच बिटवीन असेट एंड लायबिलिटी मैच्योरिटी, थर्ड कस्टमर कंप्लेंट्स एंड फोर्थ लोन डिफॉल्टर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मिसमैच बिटवीन असेट एंड लायबिलिटी मैच्योरिटी, संपत्ति और देयता की परिपक्वता बीच अंतर, बिकॉज इट हेल्प मैनेज लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रिस्क। नेक्स्ट 21 व्हाट इज रीप्राइसिंग रिस्क? रीप्राइसिंग रिस्क क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट क्रेडिट रिस्क, सेकंड करेंसी रिस्क, थर्ड रिस्क ऑफ लोन डिफॉल्ट एंड फोर्थ रिस्क अराइजिंग फ्रॉम टाइमिंग डिफरेंस इन रेट इंटरेस्ट रिसेट। करेक्ट आंसर है फोर्थ रिस्क अराइजिंग फ्रॉम टाइमिंग डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट रेट रिसेट, बिकॉज ब्याज दर पर रिसेटिंग में समय अंतर के कारण जोखिम, बिकॉज दिस रिस्क ऑकर व्हेन इंटरेस्ट रेट ऑन असेट एंड लायबिलिटी reset at different time affecting earnings। 22 एएलएम रिक्वायर बैलेंसिंग, एएलएम में किसका संतुलन आवश्यक होता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ओनली डिपॉजिट, सेकंड मार्केटिंग कॉस्ट, थर्ड लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क एंड फोर्थ ओनली लोन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, तरलता लाभप्रदता और जोखिम, बिकॉज एएलएम aims to balance liquidity profitability and risk to ensure financial stability। नेक्स्ट 23 विच रेगुलेशन गाइड एएलएम प्रैक्टिस इन इंडिया? भारत में एएलएम प्रथाओं का मार्गदर्शन कौन सा नियम करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सेकंड बेसल 3 नॉर्म्स एंड आरबीआई गाइडलाइंस, थर्ड कंपनी एक्ट ओनली एंड फोर्थ इनकम टैक्स एक्ट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड बेसल 3 नॉर्म्स एंड आरबीआई गाइडलाइंस, बेसल 3 मानदंड और आरबीआई दिशा निर्देश, बिकॉज ALM in India is governed by Basel III international norm and RBI prudential guidelines for risk management। Next 24 how can bank manage ALM risk? बैंक ALM जोखिम का प्रबंधन कैसे करते हैं? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज लोन सैंक्शन arbitrarily, second through duration matching diversification and hedging, थर्ड इग्नोर मार्केट चेंजेस एंड फोर्थ रिड्यूस स्टाफ। तो करेक्ट आंसर है सेकंड थ्रू ड्यूरेशन मैचिंग डाइवर्सिफिकेशन एंड हेजिंग, अवधि मिलान विविधीकरण और हेजिंग द्वारा, बिकॉज इफेक्टिव एएलएम इन्वॉल्व मैचिंग असेट्स लायबिलिटी ड्यूरेशन, डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो एंड यूजिंग हेजिंग टूल्स। नेक्स्ट 25 व्हाट डज लिक्विडिटी गैप इंडिकेट? तरलता गैप क्या दर्शाता है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट लोन अप्रूवल रेट, सेकंड कस्टमर डिपॉजिट साइज, थर्ड प्रॉफिट मार्जिन एंड फोर्थ डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एसेट एंड लायबिलिटी मैच्योरिंग। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एसेट एंड लायबिलिटी मैच्योरिंग, तरल संपत्ति और परिपक्व देनदारियों का अंतर, बिकॉज द लिक्विडिटी गैप शो पोटेंशियल शॉर्टफॉल वेयर लायबिलिटीज मैच्योर बिफोर लिक्विड असेट्स आर अवेलेबल। वैसे देखिए क्रेडिट मैनेजर एग्रीकल्चर एंड स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ अवेलेबल है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।